Success isn't just, reaching the top, but staying authentic while you climb. Good evening and a very, very warm welcome to all the student audiences. And today it was the big day for all the students. And one of our student has really made big. He has achieved All India rank 24 in IIM Indore. तो सोच के देखो इतने सारे स्टूडेंट्स में से ऑल इंडिया रैंक 24 आना कितनी बड़ी बात है. And not only Tanish, but his father, respected Rajesh sir, has also joined us today in this particular interview. एक खुल के बातचीत करेंगे. And why, we conduct these toppers talks. We do conduct it so that actually the students who are going to write the examination in the year 2026 and 27 should understand कि इनकी, journey कैसी रही, what were the problems that they faced, and finally coming out with the flying colors. Very warm welcome, Tanish, and very warm welcome आपका भी राजेश सर यहाँ पर. All right, Tanis, I would like to ask you, सबसे पहले IPM करने का कब सोचा? When did you actually think about doing IPM, and what was going on in your mind at point of time? Sir, my father initially introduced me to the IPM program. One of my cousins were actually giving the IPM program. And so my father, when I took commerce, my father told that you can go with that program. And once I looked at the curriculum and at the colleges that offer it, and specifically I look at IIM Ranchi, and then of course IIM Indore is the king. So after looking at that, I thought, yes, this is something I can do for sure. अजय सर, आपको कैसे पता पड़ा इसके IPM प्रोग्राम के बारे में? थोड़ा आप बताइए. सर हाँ, 2 साल पहले ही सर कजन से ही पता चला था अच्छा कि अच्छा. आईपीएम प्रोग्राम होता है. ओके. और उस तो पॉइंट ऑफ फिर टाइम में आपने सजेस्ट किया था? हाँ, फिर मैंने जब सर्च किया यूट्यूब में हाँ. तो मुझे काफी मतलब अच्छा लगा. मतलब अच्छा. तब मैंने इसे बोला कि मतलब कि आफ्टर 12 के बाद में तुमको कुछ करना है तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा. अच्छा. 10 क्लास के बाद ये 2 साल सर बहुत ज्यादा मतलब प्रिपरेशन करिए. हाँ, प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है. मतलब यही मतलब ये लाइफ बनाने के लिए है. राइट, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल. एंड मैं स्टूडेंट्स को बताऊं भी, बिकॉज काफी सारे लोग तनिष के बारे में नहीं जानते होंगे. तनिष प्रिपेयर्ड विद सुपर ग्रेड्स सिंस श्योर शॉट वन बैच. जो श्योर शॉट का फर्स्ट बैच था दैट स्टार्टेड वे बैक इन द मंथ अगस्त. सो आई थिंक तनिष हैज prepared for almost 11 months with us closely, very closely, and हमारी team has been in touch with Tanish, and after that, flying colors के साथ आज, Tanish is over here and along with his father, and his father is also there. Very very देखिए, एक important चीज in this particular journey मुझे कहीं ना कहीं चीज समझ में आ रही है कि डिसीजन यहाँ पर पेरेंट ले रहे हैं. ओके, इनिशियली, एंड वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पे ट्रांसफायर हो रहा है, एंड फाइनली बोथ ऑफ देम आर कमिंग सक्सेसफुल टुडे. So I would like to ask you this question also, Tanish, what was the lowest point of your journey? Because, lot of people actually go through the lowest point as well. And कहीं ना कहीं वो जो फेलियर होता है, वो जो अल्टीमेट फेलियर होता है, वो सक्सेस की तरफ आपको पुश करता है, क्योंकि आज काफी सारे स्टूडेंट्स का दिल टूटा है. आपका जरूर सक्सेस हुई है, लेकिन उन स्टूडेंट्स का दिल टूटा है एंड दे हैवंट मेड. उनके लिए एक बड़ी एडवाइस इस पर्टिकुलर लोवेस्ट पॉइंट से मेरे हिसाब से आनी चाहिए. यस. So for me, I think first of all, I would like to say that if you are being consistent, Right. you won't reach an extreme low or an extreme high ever. So for me, like the graph was a bit plain. Plain. I didn't All right. reach, Okay. yeah, an extreme. But if I had to pick a low, I think it will be after the board examination when my focus was a bit on the boards and less on the IPM. My mock score dropped quite a lot. I think 20, 30 marks. So I think that was quite a low point, and because only like 2 months were remaining in the examination. And I think from there, I pulled it up again with disciplined effort and consistent efforts by giving weekly mocks and so. Right. I think, so you remain consistent always. If you Yeah. can give them one recipe कि IPM boards को साथ साथ manage कैसे किया, because lot of students today may be struggling with the boards as well as IPM preparation, and you are the one who has managed it effectively. हालांकि you saw a dip after board examination, वो 20-30 marks का जो dip आया था, but despite that you have managed it really well. So if you can give them one recipe, कैसे किया? so for me, the recipe was priorities. Okay. So for me, always the priority was IPM first, boards second, and Okay. subsidiary school exams like they take mocks and other that school exams. That was always third. And I think I managed it in that order only. So before board examination, my focus was still on IPM. It was not on the mocks that school was taking. And then after boards, again, it was shifted to IPM. During boards, it was for boards only.
I still did some questions, some mocks of IPM, but primarily it was boards. So I think that's the recipe. You have to set your priorities. You can't like study boards and IPM daily or for like an year entirely. You have to give like a particular section of time. All right, so there was a strategic switch, whatever he's telling you in front of you. कि जब boards भारी हो रहे थे, that point of time he was switching towards boards, Yeah. and as and when they were light, his complete concentration was on the IPMAT. So that was a strategic switch from Tanish's side. I would also like to ask now. अब मैं राजेश सर से पूछना चाहूंगा सर, ये जो वक्त रहता है, आप ही ने मुझे सबसे पहले बताया कि यार 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट तनाव भी बहुत रहता है बच्चे के ऊपर, एंड आपने घर का माहौल किस तरीके से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया, और आपने देखा होगा काफी तनाव, स्ट्रेस वगैरह सब रहा होगा। घूमना नहीं जा पाता बच्चा, बाहर खेल नहीं पाता, सब चीजें चलती हैं, राइट? तो थोड़ा सा बताइए कि कैसा चल रहा था ये पूरे के पूरे 11-12 महीने, इनफैक्ट 2 साल आपने जो बताया। नहीं सर, माहौल एकदम नॉर्मल था सर, वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था घर पे, और बिल्कुल आसानी से बच्चे ने निकाला आपके नहीं, हिसाब मैंने से? कभी स्ट्रेस नहीं किया बच्चे को। अच्छा, नहीं वैसे वो अगर खुद स्ट्रेस लेता था कि नहीं, मतलब कैसा नहीं, था? एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। ओ, दैट्स ग्रेट, I आई थिंक। वो generally like डेडिकेटेड रहता था पढ़ाई के प्रति पूरा अपना। सो मैं तनिष से पूछना चाहूंगा कि यार, इट इज ग्रेट, वॉट एवर ही इज टेलिंग मी इट्स ग्रेट, इफ यू हैवंट टेकन स्ट्रेस, अगर आपने स्ट्रेस नहीं लिया तो स्टूडेंट्स कैसे इस तरफ जा सकते हैं कि बिना स्ट्रेस के निकाल लें एग्जाम को? I mean, I will again go with discipline and consistency. Like, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ओके। yeah, again, like there's nothing too much to it. It's just that if you are giving consistent efforts, why will you take stress? ओके, I have a plan, I will, and I'm accomplishing it. So there's no need to take stress. Of ओके। course, I will. If some friend comes to you who is actually taking stress today and he's very consistent also, what would be your advice to him? So my first advice would be to, I will ask him to first set your priorities. What do you actually want to do? All right. I've seen many students who want to do IPM because their father told. Like it was for me, but I did my own research also. So first, you do what you actually want to do. Do you actually want to do IPM? Because there is a chance like you don't want to do IPM and then you are taking stress unnecessarily. So you get your order instead and then you make a proper plan. That's the most important part, I think. You have to make a proper plan. You have to make a day by day plan. I want to do this today, this after, day after tomorrow, and so on. That's what I did actually. All right. It's not only the big day for students, but also for teachers who have taught you today. And I think सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे पता है कि teachers are continuously in touch with the students. They are talking to them. तुमने भी शायद सबसे पहले जब रिजल्ट देखा होगा तो टीचर से बात करी होगी, राइट? सो which specific mentorship session or moment from Supergrads during this particular journey today, are you remembering the most? Who all were the teachers behind your success? सबका नाम ले लो आज, because उनको अच्छा लगेगा, right? And certainly this journey, अगर तुम सुपरग्रेड्स के साथ जो जर्नी रही है उसको एक बार नटशेल में बताओ. This answer can be long, but तुम सब चीजें बताओ प्लीज. So I think the most important moment for me was actually when I first joined the batch. It was during the orientation session. Okay. Anil Sable sir took the orientation session, and after his class, like not only the orientation session, but after pretty much all of his classes, there was a different kind of confidence, it's a different kind of different kind of motivation to study, and I think I really respected that's why I really like to do his classes. Additionally, I will also like to thank Sana Jaffrey ma'am and Brinda ma'am. They took the English sessions for me, and English for me was always my weakest point. Okay. Like, yeah, so I think they really helped me in that. So overall, and And were during you the asking interview, doubts and everything from them every time? yeah, from in classes, yes, of course. Of course, you have to ask. Like, if you are attending classes, of course, you have to ask doubts. All right. And during the interview, I would also like to thank Mayur sir. He is always very quick to give replies, actually. So. All right. राजेश सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, इस पूरी जर्नी में सुपरग्रेड्स के साथ जो जर्नी रही है, आपकी जर्नी कैसी रही? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिल्कुल सहयोग मिला, कोई फीडबैक है हमारे लिए? मैं बिल्कुल इन दोनों चीजें लेने को अभी तैयार हूँ. दोनों चीजें प्लीज बताइएगा. नहीं, आपके वीडियो देखता था सर, मेरे को अच्छा लगता था। फिर इनका अच्छा. मॉक टेस्ट भी होते रहता था, ओके. नंबर भी पूछते रहता था, कितना नंबर आया, क्या आया। अब अच्छा. तुमको उसमें प्रैक्टिस करना है कि आगे मतलब क्या, कहाँ पे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको तुमको दूर करने का कोशिश करना है। बस अच्छा. प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। राइट. लेकिन खासकर क्योंकि सर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट की जर्नी भी बहुत ज्यादा रहती है, राइट? सो तनिष शायद आपके साथ आए, मुझे नहीं पता कि आप बिल्कुल एक
साथ लगे हुए थे या मैडम लगे हुए थे, कौन एग्जैक्टली लगे हुए थे, क्योंकि आप यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक पेरेंट वाली जो जर्नी है, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम हमेशा फोकस उस पर रखते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, जब भी पेरेंट बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट की पूरी जर्नी को और लगे रहते हैं उनके साथ, तो बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ये हमेशा एक ऑब्जर्वेशन रही है। सो आपकी जर्नी कैसी रही इस दौरान पूरी? नहीं सर, वैसा तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंट था कि बच्चे जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। इसे बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता था। अच्छा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता था, मतलब नहीं, जरूरत हमेशा नहीं ही पड़ता। ये एक आइडल स्टूडेंट ही रहा है, राइट? हाँ हाँ, वैसे मेरा एक बड़ा बेटा भी है। वो भी अभी बीटेक कर रहे हैं, ओके। बीआईटी मिश्रा रांची से। तो ऑलराइट, उनको भी ग्रेट। ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं पड़ा था। उससे ओके। भी इसको काफी फायदा मिला। अच्छा। वो भी कभी स्ट्रेस नहीं लेता था, तो ये भी कभी स्ट्रेस नहीं लिया। अब भाई जिस दिन स्ट्रेस हो जाएगा उस दिन पढ़ाई छोड़ देना। अच्छा, ये आपके घर पे आपने हाँ कहा हुआ है? हाँ, बट जब स्ट्रेस पढ़ाई में आ गया तो फिर पढ़ाई करना बेकार है। राइट। All right, I think the family environment is really very necessary, and I think these are the learnings from this particular family, that from the Khetan family, we all can take it. That creating stress is unnecessary altogether, and they have followed it. And really, Rajesh sir is telling us that he made his elder son also follow that particular path, and now the younger one is followed on the same path and has been successful. He's from I am from Ranchi. I'm quite sure it would be rank one in Ranchi at least. पूरे के पूरे सिटी में तो रैंक वन होगी। रैंक 24 इज अ ग्रेट अचीवमेंट गाइस। आई थिंक ओ- रैंक वन से शायद 2-3 नंबर ही पीछे होंगे, ज्यादा नहीं, बट यस, दैट्स अ ग्रेट फीट फॉर ऑल ऑफ अस। Now, next question to you. I think interview stage preparation was also a very, very, is very, very powerful and useful for every student, because if something goes wrong over there, then पूरा का पूरा 35% weightage जा सकता है. So, ओके how was your interview stage preparation with Supergrads, and what were your moments of the final interview round with IIM Indore? Yeah, So when I started my interview prep with Supergrads, yeah. initially I will not lie, I was a bit annoyed because Acha. they gave us like an HR assessment sheet and we had to answer it, and I was All right. slightly annoyed because why are they not helping us, giving us at least sample answers or something. Okay. But now that I look back, I think it was for the best because the answers that at the end of the day came out, they were very authentic in the actual interview. And I think I'm really proud of those answers. So Great. that's the interview. And I think during the interview, I think the panelists were slightly relaxed, I think, for Indore. Maybe I felt that way because of practice. I gave a lot of mocks with super grads, and How so I many think mocks exactly do you remember? Number भी नहीं याद है अभी तक. no number, I don't recall the number. I think I So gave many quite. mocks you gave. Okay. Yeah, All yeah. right. Okay. So I would also like to know, अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन यू सॉ द रिजल्ट, तब क्या माहौल था? I was just I was just using my phone. अच्छा, ठीक है. Supergrads, like a call came from Supergrads. The result is out. I immediately went to check the result. My hands were shaking when I was typing the ID and password. Okay. And when I checked it, like I didn't believe it in the first try. Like I went back and I logged in again. I did this for like 3-4 times. And after like fourth time, I was like, okay, yes, this is congratulations. I have been selected. All right. And only after that I messaged Okay. sirs and all. ओके, एंड आई वुड लाइक टू नो सर, आपका क्या रिएक्शन था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? ये शायद आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डेज है आपका जिंदगी का। सो कैसा फील कर रहे हैं अभी, और क्या मोमेंट था जब आपको रिजल्ट पता पड़ा तो? सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत खुशी हुआ। और हमारे हारे का सहारे बाबा श्याम हमारा, अच्छा। ओके। खाटू वाले की पूरी कृपा है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो यस, एंड दिट हैपेंस, आई थिंक पेरेंट्स, religious things, everything function together when the final things happen. And I can see राजेश सर वो पूरी तरीके से अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं हम सबके सामने भी। All right. Uh, Now, लास्ट क्वेश्चन टू यू तनिष, एंड उसके साथ अपन इसको एंड करेंगे, बिकॉज ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर कमिंग फ्रॉम सच अ फैंटास्टिक फैमिली, आपके फादर ने आपको इतनी मदद करी है। सो अब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टूडेंट 2026 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सम फैंटास्टिक एडवाइस, कोई ऐसी एडवाइस देके जाओ जो उनके लिए वो काफी काम करे, और वो भी बिल्कुल ऐसे सक्सेसफुल हो जैसे कि आप सक्सेसफुल हुए हो। एंड इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, इमोशनल क्वेश्चन रिलेटेड, चाहे एडवर्सिटी लेवल पर हो, आप किसी चीज से बाहर निकले इस पर्टिकुलर चीज पे, इट कैन बी रिलेटेड टू स्टडीज ऑल्सो, समथिंग दैट रियली कैन हेल्प देम अकॉर्डिंग टू यू। So the first thing I would say is that first make sure that you want to do IPM actually.
You Okay. have to look at the curriculum, you have to look at the alums, and you have to look at what job positions you will get after the course. First, you have made sure that I want to do IPM. Then I think the best thing to do is make a plan and follow that plan. If you have a plan and you follow that plan, you will never have stress, like never. So I think that's the my biggest advice to anyone. राजेश सर, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बस बच्चे को प्रेशर नहीं देना चाहिए सर। अच्छा, बस एक ही एडवाइस, और बहुत अच्छी एडवाइस है कि बच्चे को प्रेशर नहीं हाँ देना चाहिए। ऑन दैट पर्टिकुलर नोट, आई थिंक थैंक यू खेतान फैमिली, आप यहाँ पर आए एंड सर्टनली आपने हमारी अपनी दिल की बात हमारे सामने रखी, एंड सर्टनली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर मेकिंग इट बिग, तनिष। Thank you, sir. And on that particular note, only with one advice that, don't take pressure. And really, rightly said by Tanish, ki whether you actually want to do IPM or not, evaluate that first and then come up with a plan. And then that plan of action will certainly help you. Thank you, everyone, for watching this episode on Supergrats.